कंडेंसर बेसिकली कंडेंसिंग कॉइल्स होते हैं जो फ्रिज की बैक साइड पे होते हैं। जब ये हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट इन कॉइल्स के अंदर मूव करता है तो वहाँ पे हीट रिमूव होती है। इस हीट के रिमूव करने के प्रोसेस को तेज करने के लिए फैंस लगे होते हैं। Condenser coil is a heat exchanger in the refrigeration cycle. The condenser coil cools the refrigerant coming from the compressor at a high temperature. As the heat in the refrigerant is released, the refrigerant changes from vapor state to liquid state. It now comes out of the condenser at high pressure, low temperature and in liquid form. वेपरेटर कॉइल्स जो यूजुअली किसी फ्रीजर के कंपार्टमेंट के अंदर होती हैं और ये हिडन होती हैं उसकी वॉल्स के अंदर, जो ही वेपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये हीट को ऑब्जॉर्ब कर देते हैं फूड के अंदर से। जब ये हीट ऑब्जॉर्ब होती है तो कंपार्टमेंट के अंदर ठंडक, कूलिंग फील होती है। The evaporator coil is located inside the refrigerator, and the heat from the air inside is absorbed into the refrigerant. This cools the air inside the fridge. During this process, the refrigerant is boiled and evaporates, exiting the evaporator as a low pressure, low temperature vapor. It then returns to the compressor and the cycle starts again.